have the same functional group. Similarly, we see another example. All compounds which are in the alcohol compound class, they contain an OH functional group bound to the carbon atoms of the alkyl group. So if you look at this example, here is the OH functional group which is bound to the carbon atom. It is necessary that OH is bound to the carbon atom for the compound to be an alcohol. So the characteristic reactions of alcohols occur at the OH group or the directly attached carbon. So the reactions of these kind of compounds, they mainly occur either at this OH or the carbon which is directly with this OH group. So all the alcohol members will be having the same kind of reactions regardless of the structure of the remainder of the molecule. Mean this CH3 can be anything else, CH3 or CH2CH3 or any other alkyl chain. The, the functionality is this carbon with OH, so it will be an alcohol regardless of this side of the chain. So there are some compounds which can contain more than one functional group. Such compounds can belong to more than one compound class. You will encounter some compounds like the one shown here. This is acrylic acid, in which if you look, you have an alkene functional group and you have an acid functional group. So we are going to have a look at a table where at the end of this presentation, where you will see that there is an order of precedence for the functional group. So if there are more than one functional group in a compound, what will be the parent compound? So this compound will be a carboxylic acid. It has both an alkene and an acid functional group, but the acid has precedence over the alkene, so it will be an acid. It will be a carboxylic acid, and alkene will be treated as a substituent in this compound. So if you look at different classes of organic compounds which have different functional group, we're very briefly going to describe this and not spending too much time. This is an alcohol class. Its generalized abbreviation is ROH. R can be any alkyl chain. We are going to discuss about this R, what is R in on the next slides. So a representative example of an alcohol class is this CH3CH2OH. Its name is ethanol or ethyl alcohol. Similarly, alkyl halides class has the functional group halogens. So RCl, it may be RBr, R iodide. So any halogen can be with this R with the alkyl chain. So its representative example is chloroethane. Similarly, amines have the functional group NH2. Epoxide have this oxygen bridging between two carbons, and the compound should be cyclic. Otherwise, it will be an ether. Sorry, ether is ROR. Here is oxygen bridging between two carbon atoms, and the compound is acyclic. Similarly, nitroyls, it has the functional group C triple bond N, nitroalkanes NO2, and thiols SH. So these are different functional groups. There are many others, but these are some representative and important compounds which you will encounter during the study of organic chemistry. Now we look at the R notation. We just discussed this R. What is this R we are going to discuss now? Sometimes we want to use a general structure to represent an entire class of compounds. In such a case, when we just want to use a general structure at one end of the compound and just want to focus on the functional group, we can use the R notation, where R is used to represent the alkyl groups. For example,
if you look at this RCl, that can be used to represent an alkyl halide or alkyl chloride in this particular case. It may be CH3Cl, it may be this compound CH3CH and then Cl, and here is another CH3 on this CH, or it may be this cyclohexane and then Cl, or maybe any of these pink colored molecules. So R can be used to generalize the um, alkyl chain for due to some reasons. So R may be CH3, or maybe this one, cyclohexyl, any one in these compounds. This is a really general alkyl group formula. So if we look at the aryl groups, they can also be abbreviated and generalized. For example, if you look at what are aryl groups? Aryl groups are the substituent groups derived from benzene and its derivatives. The simplest aryl group is the phenyl group, which is abbreviated as PH. Uh, this is derived from the hydrocarbon benzene. So if you look at this benzene, where one hydrogen is missing, this will be called as a phenyl group. And we have attached this chain with this benzene ring. So instead of writing like this, we can also write it with this notation. We can use PH phenyl instead of drawing this whole benzene ring. It will mean the same. Or even we may draw a shorter representation of this one like this. So these all three formulas represent the same compound. So aryl groups can be different than the phenyl ones. They can be anything like this. If you look at AROH, so here AR can represent different structures like this benzene ring with CH3 on it, or a benzene ring with Cl on it, or anything else. So AR is pretty general than the pH or phenyl. So the R notation can be used to describe the alkyl and aryl groups in an organic compound, where we have to use a general formula just to represent the whole class and to focus on the functional group. Now we move on to the remaining part of the IUPAC nomenclature we discussed in the previous lecture. Uh, in this one, we are going to discuss about the IUPAC nomenclature of alkyl halides, alcohol ethers, aldehyde ketones, carboxylic acids, esters, etc. So all the general rules remain the same for other classes of organic compounds as we discussed previously, but different functional groups, they are responsible to define the class of a compound. We are going to discuss in detail on the next slides. So if we look at the IUPAC nomenclature of alkyl or aryl halides, in haloalkanes or haloarenes, Rx or ARX, halogen functional groups are prefixed with the bonding position and take the form of fluoro, chloro, bromo, iodo, etc. depending on the halogen. So if there are multiple groups, you will see dichloro, trichloro, etc. And dissimilar groups are ordered alphabetically as before. इसका मतलब है, अगर हम इसको थोड़ा सा मोर एलेबोरेट करना चाहें या बेहतर अंदाज में समझना चाहें कि जो हैलोजेंस होंगे वो एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल होंगे, मतलब उनको जस्ट हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट डील करेंगे, और जो पेरेंट चेन होगी हाइड्रोकार्बन चेन, उसका नाम हाइड्रोकार्बन वाला ही होगा. फॉर एग्जांपल, अगर आप इस क्लोरोफॉर्म को देखें, क्लोरोफॉर्म इसका जनरल नेम है, it will be called as trichloromethane. So why methane? Because it has one carbon, this carbon atom with a hydrogen. So one carbon atom
with 4 hydrogens is called methane, and here 3 hydrogens are replaced by chlorine groups, so we will call it trichloromethane. Similarly, if you look at this one, here the parent carbon chain is ethane, shown in yellow. 1, 2, these mean 2 carbon atoms. On carbon number 1, there are 3 fluoride groups, and on carbon number 2, there is a chlorine, a hydrogen, and bromine. So the name of this will be 2-bromo, 2-chloro, and then 1,1,1 trifluoroethane. So the names of the other substituents are alphabetically shown, like you see bromo, B comes first, and then C for chloro. So that's how you name the alkyl or aryl halides. Next is the IUPAC nomenclature of alcohols. Alcohols, they take the suffix ol at the end with with an infinix numerical bonding position. अल्कोहल्स के एंड पे हम ओ एल का एडिशन करते हैं, और जो उसका पोजीशन है, ओ एच ग्रुप की पोजीशन है, वो एज एन इनफिनिक्स, यानी कि वो दरमियान में हम उसको ओल से पहले उसको मेंशन कर देते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ यू लुक एट दिस कंपाउंड here, 1 2 3 3 carbon atoms, it will be propane, and one hydrogen is replaced by an OH group, so it will be propan 1-ol. It means the OH group is at carbon number 1, so that is why it will be propan 1-ol. And if there are more than one hydroxyl groups, then you can use the suffixes like diol, triol, tetraol, etc. For example, if you look at the example below, ethylene glycol, it has 2 OH groups, so its IUPAC name will be ethane 1,2-diol. 1, 2 mean one hydroxyl is on first carbon and the second hydroxyl is on the second carbon atom. That's how you name the alcohols class of compounds. Next comes the IUPAC nomenclature of ethers. Ethers, whose general formula is ROR. R is the alkyl group. It can be any alkyl group, and oxygen is bridging between these two alkyl groups. Um, the in naming the ethers by IUPAC system, the shorter of the two chains becomes the first part of the name with the "-ane" suffix changed to "-oxy", and the longer alkyl chain that becomes a suffix for the name of the ether. इसमें क्या होता है कि जो अल्काइल चेन इन दो R में से जो अल्काइल चेन छोटी है, उसका हम जो हाइड्रोकार्बन नेम है लाइक मीथेन है, तो एन हटा के OXY ऑक्सी लगा देते हैं, मीथेन से मिथॉक्सी बन जाएगा, और जो लंबी अल्काइल चेन है उसको एज अ सफिक्स ईथर के नेम तौर पे इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर आप इस कंपाउंड को देखें, CH3OCH3, it's a dimethyl ether, it's is the common name for it. इसमें क्या है कि जो इसमें तो चूंकि दोनों चेन्स बराबर हैं, इसमें चाहे इसको हम कंसिडर करें उसको करें, एक ही बात है. CH3 का एन हटा के मीथेन का एन हटा के मिथॉक्सी बना दिया, मिथॉक्सी, एंड द सेकंड वन इज मीथेन. इसका नाम एज इट इज ईथर के नेम के तौर पे इस्तेमाल हो जाएगा. इसी तरह अगर आप इस एग्जांपल को देखें, ये ज़रा ज़्यादा क्लियर होगी कि जो छोटी कार्बन चेन है, CH3 छोटी कार्बन चेन है और CH2 CH3 लॉन्गर कार्बन चेन है. तो इसमें क्या है कि छोटी कार्बन चेन का नाम हम विद ऑक्सी इस्तेमाल करेंगे, सो मीथॉक्सी एंड देन ईथेन. इसको हम ईथॉक्सी मीथेन नहीं कहेंगे, दैट विल बी अगेंस्ट द रूल्स. सो बाय रूल क्या होगा कि शॉर्टर चेन का नाम पहले और लॉन्गर चेन का एज अ सफिक्स इस्तेमाल होगा. There might be another case where the oxygen is not attached to the end of the main alkane chain.
अगर तो जो ऑक्सीजन है वो एंड पे लगा हुआ है तो जिस तरह हमने नेमिंग अभी प्रीवियस स्लाइड पे की है उसी तरह चलेगी, लेकिन जिस तरह ये देखें मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी इथेन, लेकिन अगर ऑक्सीजन एटम चेन के एंड पे नहीं बल्कि कहीं सेंटर में या कहीं और लगा हुआ है, तो फिर हमने क्या करना है कि उस पूरी जो ऑक्सीजन वाली चेन जो कि लगी हुई है उसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे, एज अ साइड चेन कंसीडर करेंगे, और जिसके ऊपर लगी है जो पेरेंट चेन है उसका नाम हम ईथर के नेम के तौर पे इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये जो कंपाउंड है ये एंड पे दिया हुआ है, इसमें आप देखें कि इसका नाम क्या होगा। इसमें ये जो येलो कलर में है ये मेन पेरेंट चेन है और इसके ऊपर एक मीथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है। तो इस अब चूंकि मिथॉक्सी ग्रुप सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है, सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है जी, इस तरह से हम ईथर्स को नाम देते हैं IUPAC सिस्टम के तहत। नेक्स्ट इज द IUPAC nomenclature of aldehydes. So aldehydes, they take the suffix al dash al at the end instead of the dash "-ane" from the hydrocarbons alkanes. So if other functional groups are also present, the chain is numbered such that the aldehyde carbon is in the first position unless functional groups of higher precedence are present. इसमें क्या है कि अगर एक एल्डिहाइड के अलावा और भी फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं तो नंबरिंग ऐसे करनी है कि एल्डिहाइड का जो कार्बन है उसको नंबर 1 मिले और बाकी जो दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, दूसरे कार्बन हैं, उनको आगे 1 से आगे वाली नंबरिंग मिल जाए। लेकिन अगर तो हायर प्रेसिडेंस वाले फंक्शनल ग्रुप मौजूद होंगे तो फिर एल्डिहाइड को पहला नंबर नहीं देंगे, फिर उनको पहला नंबर देंगे। ये आगे नेक्स्ट स्लाइड्स पे एक टेबल आएगा जिसमें आपको ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस पता चलेगा। तो अगर इस कंपाउंड को देखें, मीथेन से हमने ANE हटा दिया, तो सॉरी आखिरी ई हटा के तो AL लगा दिया, मेथनल। ठीक है, एक कार्बन है तो ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है एल्डिहाइड का, तो इसको मिथेनॉल कहेंगे। इसी तरह अगर इस कंपाउंड को देखें, कार्बन ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आ गया, फिर 1 2 3 4 4 कार्बन आ गए, तो इसका नाम ब्यूटेन से ई हटा के AL लगा दिया, ब्यूटेनॉल। इसका कॉमन नेम ब्यूटारेल्डिहाइड है, लेकिन इसका IUPAC नेम क्या है, ब्यूटेनॉल। तो यहाँ पे 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब 1 मेंशन करने की, क्योंकि एल्डिहाइड का ग्रुप आता ही चेन के एंड में है, तो इसकी मतलब ब्यूटेन 1 अल कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 इज अंडरस्टूड। सो अगर तो आपने देखें कि और इसमें हायर प्रेसिडेंस के फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हों तो फिर आप कैसे उसको नाम देंगे कि एल्डिहाइड को एज अ साइड चेन कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल इन दिस कंपाउंड द वर्ड ऑक्सो विल बी यूज्ड फॉर द एल्डिहाइड ऑक्सीजन। इसमें देखें कि कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रेजेंट है, तो उसका चूंकि प्रेसिडेंस ऑर्डर हायर है देन द एल्डिहाइड, सो इसको हम नाम देंगे 3-oxopropanoic acid. It will be treated as an acid, not an aldehyde. इसी तरह if the carbon in the carbonyl group cannot be included in the attached chain like this one, यहाँ पे देखें साइक्लिक अल्काइल चेन है, तो इस चेन के अंदर इसको हम कार्बोनिल को एडजस्ट नहीं कर सकते, तो ये एक साइड पे है। तो फिर ऐसे कंपाउंड्स में सफिक्स कार्बेल्डिहाइड यूज होगा। फॉर एग्जांपल इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। इट मीन्स कि साइक्लोहेक्सेन चेन इस कार्बन के साथ अलग लगी हुई है और ये एज इट इज अकेला मौजूद है, तो इसका नाम साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड होगा। नेक्स्ट इज द नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स। कीटोन्स में क्या होता है कि we take the suffix "-on" at the end. It is pronounced as "-on", not "-one". You have to take care of this. And we use the infix position number, mean के जो C डबल बॉन्ड और कार्बन की पोजीशन है उसको हम मेंशन करेंगे, क्योंकि एल्डिहाइड में तो कार्बोनिल एंड पे आएगा लेकिन कीटोन में कहीं भी हो सकता है, सेंटर में भी हो सकता है।
तो और उसी तरह के अगर हायर प्रेसिडेंस का कोई ग्रुप मौजूद हो तो फिर जो कार्बोनिल है इसको हम ऑक्सो के तौर पे यूज़ कर लेंगे और कंपाउंड को हायर प्रेसिडेंस के हिसाब से नाम देंगे। फॉर एग्जांपल अगर इसको देखें आप एसीटोन को, इसमें 1 2 3 तीन कार्बन हैं और जो डबल बॉन्ड O है ये कार्बन नंबर 2 पे है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन फॉर 3 कार्बन एंड 2 ओन, सेकंड पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप है। इस कंपाउंड में देखें यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप में मौजूद है और कीटोन भी, तो एल्डिहाइड की प्रेसिडेंस हायर है इसलिए हम इसको पेरेंट नाम जो है वो एल्डिहाइड वाला देंगे। तो जो ये कीटोनिक ग्रुप है इसको एज ऑक्सो हम नेम दे लेंगे, तो इसका नाम क्या होगा, 3 ऑक्सो हेक्सानल। हेक्सानल क्योंकि 6 कार्बन हैं, तो एल क्योंकि ये एल्डिहाइड ग्रुप है। नेक्स्ट है जी IUPAC nomenclature of carboxylic acids. In general, carboxylic acids are named with the suffix oic acid. इनमें हम at the end oic acid का इजाफा करेंगे। So as with the aldehydes, the carbon carboxyl functional group must take the first position on the main chain. इसमें भी बिल्कुल उसी तरह के एल्डिहाइड्स की तरह कार्बोक्सिल ग्रुप भी चेन के एंड पे ही आएगा और कार्बोक्सिल वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, इसको पोजीशन नंबर 1 आपने कंसिडर करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस कंपाउंड को देखें, दिस इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड, तो इसका नेम क्या होगा, ये कार्बोक्सिल ग्रुप आ गया, एंड पे चेन के इस कार्बन का नंबर 1 होगा, ये 2 और ये 3, तो 2 पोजीशन के ऊपर एक और हाइड्रोक्सी लगा हुआ है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। अब प्रोपेन का ई हटा दिया और ओइक एसिड का इजाफा कर दिया, तो ये बन जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। दिस इज सिंपल प्रोपानोइक एसिड वेयर देयर इज नो हाइड्रोक्सी अटैच्ड, सो कार्बन कार्बोक्सिल कार्बन would be number 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड, और यहाँ पे 1 मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कार्बोक्सिल एसिड होता ही नंबर 1 है। Sometimes some traditional names for common carboxylic acid, such as the acetic acid, they are in such widespread use that IUPAC has retained them in its nomenclature. हालांकि उनके systematic names भी मौजूद हैं। For example, acetic acid, its systematic name is ethanoic acid, but acetic acid is so widely used that people mostly call it acetic acid, not ethanoic acid. If there are multiple carboxyl groups on the same parent chain, then what will we do? Then we can use the multiple prefixes like if you look at this malonic acid where there are 2 carboxyl groups on the parent chain, and if you look at the carbon chain it will be 1 2 3 carbons. It will be propanoic acid, but there are 2 carboxylic acids, so we will say propane dioic acid. Propane dioic. Dioic means there are 2 carboxyl functional groups. And in cases, there might be different cases, like if you look at this example, here you may also use the suffix carboxylic acid. This is called malitic acid, where there's a benzene ring and there are 6 carboxylic groups attached to that benzene ring instead of its hydrogens. So in this case, we name it as benzene 1 2 3 4 5 6 hexacarboxylic acid, or simply benzene hexacarboxylic acid, because it is understood that they are all on 1 2 3 4 5 6 positions. And in this case, it is important to note that the carboxyl groups, they are not counted as part of the main chain. Main chain is benzene and carboxyl groups are separately attached to it. Next comes the IUPAC nomenclature of esters. Esters are derivatives of carboxylic acids. So they are here you can see that their general formula is R, C, double bond O, and then OR. This O is bridging between the carboxyl group and the alkyl chain. So
what happens in these cases, the alkyl, this R prime group that is named first, and then the carboxyl part is named as a separate word based on the carboxylic acid name, with the ending changed from oic acid to O8. इसमें क्या होता है कि जो कार्बोक्सिल ये जो अल्काइल पार्ट है इसको हम पहले नाम देते हैं, फिर कार्बोक्सिल चेन को नाम देते हैं, और वही कार्बोक्सिलिक एसिड वाला नेम होगा. फॉर एग्जांपल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH अगर होता तो ये प्रोपानोइक एसिड होता, तो जस्ट आखिरी ओइक एसिड हटा के O8 लगा दिया, मीथाइल प्रोपेनोएट इन दिस केस. इसी तरह अगर आप इसको देखें, ये जो अल्काइल चेन थी, ये 2 क्लोरो इथाइल, इथाइल में दूसरी पोजीशन पे क्लोरीन भी मौजूद है, और फिर बेंजोइक एसिड का नाम, बेंजोइक एसिड की जगह हमने आखिर में OH लगाया, बेंजोएट, 2 क्लोरो इथाइल बेंजोएट. For some esters like ethyl acetate, ethyl formate, or diethyl phthalate, which are based on common acids, IUPAC recommends the use of these established names called retained names. IUPAC ने क्या किया कि जो मशहूर कुछ एसिड्स थे उनके एस्टर्स को, उनके कॉमन नेम्स को ही रिटेन किया है अपने सिस्टम के अंदर. फॉर एग्जांपल ethyl acetate, it's a very common name for this ester, ethyl, and acetate instead of ethyl ethanoate. Similarly, methyl ethanoate or methyl formate can also be used. Methyl methanoate is the standard name, systematic name, and methyl formate can be used for this compound. Methyl acetate can be used for methyl ethanoate, and ethyl formate can be used for this ethyl methanoate compound. ये ब्रैकेट में जो नाम शो हुए हैं ये रिटेन नेम्स हैं इनके. Next is the IUPAC nomenclature of amines. Amines are named for the attached alkane chain with the suffix amine at the end. For example, CH3NH2. Here CH3 will be used as a prefix and NH2 will be as amine at the end. So methane amine. Methane amine, it will be its systematic name. And if it is necessary, the bonding position of the amine group is infixed. So if you look at this compound, CH3, CH2, CH2, NH2, it will be called propane 1 amine because amine is attached at carbon number 1. And if it is like this, CH3, NH2, and then CH3, it will be propane 2 amine because amine is attached at the carbon number 2. Here you can see this methanamine, also called as methylamine. This is N-propylamine or propan 1 amine. This is isopropylamine or propan 2 amine. That was for the primary amines. If you look at the secondary amines, which are of the form RNHR, where there are 2 carbon atoms attached to the nitrogen, the longest carbon chain attached to the nitrogen atom becomes the primary name of the amine, and other chains are prefixed as alkyl group with the location prefix given as its an italic N. इसमें क्या होता है कि जो लॉन्गेस्ट चेन है वो पेरेंट चेन बन जाएगी, और बाकी जो कार्बन चेन है छोटी वाली वो नाइट्रोजन के ऊपर लगी हुई होगी, तो उसको हम इटैलिक N के साथ उसकी लोकेशन शो करेंगे. फॉर एग्जांपल, if you look at this compound CH3 NH CH2 CH3, it will be called N-methyl because this carbon methyl is attached on a nitrogen, and then ethanamine because this is the parent chain ethane amine. ठीक हो गया. This was for the secondary amines. Next we look at the tertiary amines. Tertiary amines ये बिल्कुल उसी तरह secondary amines की तरह हम इनको treat करेंगे, और जो छोटी चेन्स हैं उनको हम N के साथ उनकी पोजीशन मेंशन करेंगे. फॉर एग्जांपल N इथाइल, ये देखें N पे इथाइल ग्रुप लगा है, N मीथाइल, N के ऊपर मिथाइल भी लगा है, प्रोपेन अमीन, ये जो इसकी मेजर पेरेंट चेन हो गई. तो इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स हैं उनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर करना है. फॉर एग्जांपल इथाइल एंड मिथाइल, E comes before M.
So this was about the nomenclature of amines. Next we look at the order of precedence. अगली स्लाइड पे जो आप टेबल देखेंगे इसमें ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस दिया गया है, जो कि डिटरमिन करता है कि कौन से ग्रुप को नेम प्रीफिक्स के तौर पे देना है या सफिक्स के तौर पे देना है. तो इट इज इन दी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस. इफ यू लुक एट दिस, फॉर एग्जांपल, अगर एक ही कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड भी मौजूद हो, कार्बोथायोइक एसिड्स मौजूद हो, सल्फोनिक एसिड, सल्फेनिक एसिड एट्सेट्रा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेफरेंस रखेगा बाकियों के ऊपर. इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड जो में एस्टर है वो प्रेफर्ड है, इसाइल हैलाइड पे वो प्रेफर्ड है, एमाइड पे, एंड सो ऑन. तो ये एक जनरलाइज टेबल है जिसमें इंपॉर्टेंट कंपाउंड शो किए गए हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो कि आप खुद भी बुक्स या इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं. ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो ये प्रेसिडेंस ऑर्डर आप फॉलो करेंगे while naming the organic compounds. Next we move on to the next section where we learn about nucleophiles, electrophiles and leaving groups. So let's discuss the following reaction. इस रिएक्शन को देखें आप. इसमें ब्रोमोमीथेन अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रही है और मिथाइल अमोनियम आयन बन रहा है और ब्रोमाइड आयन जनरेट हो रहा है. तो अगर लेफ्ट साइड को आप देखें तो अमोनिया इज एक्टिंग एज अ लेविस बेस. लेविस बेस क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है. तो अमोनिया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रही है, इसलिए इट कैन बी सेड एज अ लेविस बेस. इस रिएक्शन को भी हम लेविस एसिड बेस पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं. कार्बन चूंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है नाइट्रोजन से, इसलिए कार्बन क्या होगा? इट विल बी लेविस एसिड. लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो कार्बन जो है वो ये अपना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट भी कर रहा है ब्रोमीन को. तो इस लिहाज से कार्बन एक लेविस बेस भी हो गया. ब्रोमीन को अगर देखें तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया? ये लेविस एसिड हो गया. तो अब यहाँ पे देखें कि थोड़ी सी चीज़ें इतनी क्लियर नहीं रही कि कार्बन लेविस एसिड के तौर पे भी बिहेव कर रहा है, लेविस बेस के तौर पे भी बिहेव कर रहा है. तो ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये इतनी यूजफुल नहीं रहती ऐसे केसेस के अंदर जहाँ पे जो रिएक्शन के अंदर हर एक्टर है, मतलब एक एक्टर ये है, एक ये है, एक ये है, कि कौन सा एक्टर क्या कर रहा है, कोई लिविस एसिड है या बेस है. चीज़ें जो है वो इतनी क्लियर नहीं रहती. तो इन रिएक्शंस के लिए, इस तरह के रिएक्शंस के लिए हमारे पास फिर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, जिस तरह के न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, लिविंग ग्रुप, बेस एटसेट्रा, जिनको आगे हम डिस्कस करते हैं कि इनको हम कैसे यूज करते हैं. So the terms used for these components of the electron pair displacement reactions, these are nucleophiles, electrophiles, leaving groups. What is a nucleophile? Nucleophile, the word philos is the Greek word meaning loving. So nucleophile means nucleus loving. That is a species that donates an electron pair to form a new bond. So in this case, nitrogen is this ammonia is a species which is donating an electron pair to form a new bond. Here you may see the new bond. So अमोनिया एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है एक नया बॉन्ड बनाने के लिए. तो अमोनिया क्या हो गया? ये न्यूक्लियोफाइल हो गया. इस रिएक्शन में अमोनिया क्या हो गया? ये न्यूक्लियोफाइल है. नेक्स्ट इज द एटम दैट एक्चुअली डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर. अब अमोनिया के अंदर कौन सा एटम एक्चुअली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है? हाइड्रोजन तो नहीं कर रहा, नाइट्रोजन कर रहा है. तो नाइट्रोजन क्या हो गया? दैट विल बी कॉल्ड अ न्यूक्लियोफिलिक एटम और द न्यूक्लियोफिलिक सेंटर. इसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कहेंगे. सो अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है. What is an electrophile? Electrophile means electron loving. That is a species that accepts an electron pair from the nucleophile. तो जो species nucleophile से electron pair accept कर रही है उसको क्या कहेंगे? Electrophile कहेंगे. तो इस reaction में electrophile कौन सा हो गया?
ब्रोमोमीथेन, ये इलेक्ट्रोफाइल है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है ये पूरा मॉलिक्यूल। अब अगर इसके अंदर देखें कि इलेक्ट्रॉन पेयर ये पूरा मॉलिक्यूल तो एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन एक्चुअल एटम कौन सा है जो कि एक्सेप्ट कर रहा है, पूरा मॉलिक्यूल तो नहीं कर रहा, जिसमें एक्चुअल एटम है जो कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव कर रहा है, उसको हम इलेक्ट्रोफिलिक एटम या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहेंगे। So the atom of electrophile that actually accepts the electron pair, that is called as the electrophilic center or electrophilic atom. So in this case, carbon of the bromomethane is the electrophilic center. Next is the leaving group. What is a leaving group? The group that accepts electrons from the breaking bond is called a leaving group. For example, if you look at this particular example, in bromomethane, bromine atom is accepting an electron pair from a broken bond, a breaking bond. So it turns into a bromide. So it will be called as a leaving group because it is leaving this molecule with breaking bonds electron pair. So bromide will be generated, which is a leaving group. So if we generalize it, if we generalize or summarize this reaction, so ammonia is the nucleophile in this case, and the nucleophilic center is this nitrogen atom. This bromomethane is the electrophile, and the electrophilic center is this carbon atom, and bromine in this bromomethane is the leaving group, which forms bromide after accepting an electron pair. If you look at the reverse reaction, so this reaction might be reversible. If you look at the reverse reaction, the role of nucleophile and the leaving group are reversed. So now bromide will be acting as a nucleophile, and leaving group would be ammonia instead of the bromide, which was in the forward reaction. So the role of electrophilic center is the same. That is not changed. We can use another analogy in what happens in a game of pools when two balls are touching and one of them is hit by the cue ball. इसको हम बहुत अच्छे तरीके से इस तरह भी समझ सकते हैं। आप कंसिडर करें कि ये एक क्यू बॉल है, मतलब ये पूल है, स्नूकर टेबल है, और एक क्यू बॉल को आप स्टिक से हिट करते हैं। ये दो बॉल्स और पड़े हुए हैं, नंबर 3 एंड नंबर 4। तो क्यू बॉल जो है जाके नंबर 3 को हिट करता है, तो चूंकि ये दोनों इकट्ठे हैं तो 3 4 को टच करेगा तो 4 आगे मूव कर जाएगा। तो इस केस में जो क्यू बॉल हुआ वो क्या है, वो न्यूक्लियोफाइल है, और ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, और जो लीविंग ग्रुप हो गया वो नंबर 4 होगा। नंबर 4 will be propelled away, that will be a leaving group. तो इस एनालॉजी को आप बिल्कुल अपने रिएक्शन के ऊपर फिट करके तो इसको अपने जहन में रख सकते हैं। इस तरह से आपको ये चीज़ भूलेगी नहीं कि न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और लीविंग ग्रुप क्या होते हैं। Next is the Bronsted-Lowry acids and bases. हमने अभी तक जो है वो न्यूक्लियोफाइल, लीविंग ग्रुप और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पढ़ा। So we are now going to discuss about a base and then see that a nucleophile and a base, they might be different characters sometimes. Although Bronsted-Lowry theory is less general than the Lewis concept, the Bronsted-Lowry acid-base concept provides another way of thinking about acids and bases that is extremely important and useful in organic chemistry. This theory was published in 1923. In the same year, Lewis formulated his ideas of acidity and basicity. So according to this theory, a species that donates a proton in a chemical reaction is called a Bronsted acid,
and a species that accepts a proton in a chemical reaction is a Bronsted base. So ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी के तहत जो स्पीशी प्रोटॉन डोनेट करती है वो एसिड कहलाती है, और जो स्पीशी प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है वो बेस कहलाती है। तो इसी तरह से अगर लीविस थ्योरी को देखा जाए तो उसमें जो स्पीशी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है वो बेस होती है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती है वो एसिड होती है। अब इन इन चीज़ों को जहन में रख के हम आगे मूव करते हैं। If you look at this reaction, a hydroxide ion is donating an electron pair to this ammonium ion. So hydroxide ion can be called a Lewis base. लेकिन अगर आप दूसरी definition से देखें कि a species that accepts a proton in a chemical reaction is a Bronsted base, तो ये एक Bronsted base भी है because it is accepting a proton in a chemical reaction and forming a stable molecule, that is water molecule. तो अगर लेफ्ट साइड पे देखें, अमोनियम ion is acting as a Bronsted acid because it is giving a proton, and hydroxide ion as a Bronsted base because it is accepting a proton. So जो ये क्लासिकल डेफिनेशन थी लास्ट स्लाइड पे, ये मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन के ऊपर फोकस करती है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वी आर ऑलवेज गोइंग टू फोकस ऑन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉट ऑन द मूवमेंट ऑफ protons. So any Bronsted acid base reaction can be described with the curved arrow notation for electron pair displacement reactions. तो अगर आप इसको देखें तो हम कर्व्ड एरो नोटेशन से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से इधर मूव हो रहा है, तो ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर था ये वापस नाइट्रोजन पे आ गया, जो कि नाइट्रोजन के पास एज अ लोन पेयर यहाँ पे प्रोडक्ट्स के अंदर शो हो रहा है, और जो प्रोटॉन ट्रांसफ़र हुआ है वो ये OH के साथ यहाँ पे मौजूद है। So Bronsted acid base reaction is nothing more than a special case of an electron pair displacement reaction. अभी जो हमने पीछे electron pair displacement reaction पढ़े, जिनके अंदर हमने न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और लीविंग ग्रुप्स को देखा, तो ये Bronsted-Lowry acid base भी एक स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसके अंदर द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इज अ प्रोटॉन। ये चीज़ याद रखनी है आपने कि नॉर्मल इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कोई भी हो सकता है, जिस तरह हमने पिछली एग्जांपल्स में देखा कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या था, ये भी हम यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर देखें, इसमें कार्बन था, प्रोटॉन नहीं था, लेकिन ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड बेस जो है ना, वो कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है जिसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो है वो प्रोटॉन है। So it is the action of electrons that causes the net transfer of a proton from Bronsted acid to the Bronsted base. तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये नेट जो है ना एक प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है एक ब्रोंस्टेड एसिड से ब्रोंस्टेड बेस की तरफ। तो अगर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो है वो प्रोटॉन हो तो इलेक्ट्रॉन डोनर विल बी कॉल्ड एज अ बेस रादर देन अ न्यूक्लियोफाइल। इस चीज की समझ आ गई कि बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या फर्क होगा, कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अगर प्रोटॉन होगा तो जो इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशी होगी वो बेस कहलाएगी। तो अगर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर प्रोटॉन के अलावा कोई एटम होगा लाइक कार्बन एटम, तो फिर जो इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशी होगी वो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगी, वो बेस नहीं कहलाएगी। ठीक हो गया? तो ये मेन डिफरेंस है बिटवीन अ बेस एंड अ न्यूक्लियोफाइल। सो here you may see that many organic electron pair displacement reactions have acid-base belongings. In the following example, the only formal difference, अभी एक example ये एक next slide पे आएगी. So the only formal difference is the electrophilic center, a proton in the Bronsted acid-base reaction, and something other than a proton in other electron pair displacement reactions. So अगर इस reaction को देखें तो यहाँ पे electrophilic center proton है,
ये देखें जो बेस या न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किसको कर रहा है, प्रोटॉन को कर रहा है। तो इस केस में ये OH नेगेटिव क्या होगा, इट विल बी अ बेस, इट विल बी अ बेस। And if you look at this reaction, here the OH negative is donating its electron pair to a carbon atom. So यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वो प्रोटॉन नहीं है, वो कार्बन एटम है। तो इस तरह इस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डोनर इट विल बी अ न्यूक्लियोफाइल, इट विल नॉट बी अ बेस, इट विल बी कॉल्ड अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये मेन जो डिफरेंस है बिटवीन अ न्यूक्लियोफाइल एंड अ बेस, इसको आपने जहन में रखना है। So, based on this lecture, I have a few questions for you people. ये एक तो ये क्वेश्चन इसके अंदर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, आपने उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको क्लासिफाई करना है। और नेक्स्ट है इसमें आपने IUPAC नेम्स लिखने हैं इन कंपाउंड्स के। चूंकि हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया है तो अब ये आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज है जो कि आपने करनी है। So that was all about today's lecture. Inshallah, we'll meet in some next lecture. Until then, Allah Hafiz.